Om Shanti. So, with this sweet song, we have invoked the presence of the Supreme amongst us, and we are blessed that we are under His canopy. हम परमात्मा की छत्र छाया में आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं. We'll begin with the introduction of the institution Brahma Kumaris. So, Brahma Kumaris World Spiritual University, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये स्वयं निराकार परमात्मा की प्रेरणा से it was incepted and it began in 1936 in Hyderabad, Sindh, which is in Pakistan right now, with the inspiration of God Almighty through his corporeal medium Prajapita Brahma. And then so our founder father Prajapita Brahma, who then recognized the potential of women, and he kept the women as the leading in the leading role in the organization, and that's why the organization is called Brahma Kumaris. It is one of the only world's largest spiritual women-led organization. So where you can see sisters who have dedicated their life to this service of humanity across the globe. And what is the uniqueness of this organization is that we are secular, and people from all backgrounds, like all religions, culture, multinational age groups, they are coming and learning, taking benefit of Raj Yoga meditation, which is the basic offering of the organization. The organization is run with the voluntary contributions of the beneficiaries. So our services are all free of charge, whether it is residential or otherwise. So we are present globally in 140 countries with over 4,500 branches. And so you can see that it has been serving the society for last. So for past 87 years, we have been serving the humanity and trying to bring those core values back into the human spirit which we were born with, like love, compassion, peace, harmony, joy, power, purity. So which is common to everyone, no matter which profession we are, which age group or which caste we are born in. So we believe in the intrinsic goodness of every human being, and we see everybody as a spiritual being, a spark of light in this human body. So these are few campuses of Brahma Kumaris. International headquarters is in Mount Abu, Rajasthan, and these are located there, which you can see on the screen. Brahma Kumaris is also affiliated to UN as international NGO, and we have consultative status with UNICEF and UNESCO. The basic offering of Raj Yoga meditation, which is given by Brahma Kumaris free of charge, it is the only kind of meditation which is done with open eyes. And you can do it anywhere, anytime, anyone can do it. No physical body organ is required. Even a blind, a deaf, dumb person can, and differently abled people can also practice this meditation, because it is just a matter of awareness which we bring. It is done mentally, and we welcome everyone to learn this meditation. It does not require you any mantra chanting or breath control or any physical posture or asanas. You can just do it even in 10 seconds while you are traveling in a lift, or you're having shower, you are driving, you're having your meals. It's just a matter of how aware I am. This is the global presence of Brahma Kumaris across the world, with many retreat centers.
And also we have Raj Yoga Education and Research Foundation, which is a sister concern of Brahma Kumaris. And there are 20 wings which are working under it, like art and cultural, administration wing, to cater to different sectors of the society. Women wing, rural wing, youth, education. IT is the youngest wing amongst this list, but it has been working efficiently. It was incepted in April 2015. And since then, because it was seen the need of spirituality in this profession also, because we see that IT professionals are most stressed out because of the working hours, the deadlines, and many other factors. So IT wing is efficiently working to reduce that stress, to restore the work-life balance, and to improve the proficiency in their personal and professional life, so that we move towards the ladder of success, but we are also happy doing that. So now I would like to welcome our dear sister Rama Didi, who has specially come from Shrifort. She is the IT wing coordinator for Delhi and NCR region. She will introduce us about today's program, and our sisters will welcome her with planters, and we will have a round of applause for her because it is all being done in her guidance. Om Shanti. So once again, a very warm welcome to all of you who have gathered here for this beautiful evening. So today's topic is inner peace through inner technology. We all live in a world where we are surrounded by technology. And as we know very well, all this technology has brought immense comfort into our lives. It has given us support, it has enhanced our physical well-being, and it has become part of every sector of human life. But this interface with technology has also created different kind of challenges. So I would say that many of us are overwhelmed by technology, and sometimes it becomes distracting and addictive. But the technology that we are going to explore today in this talk by our esteemed sister Shivani, it's about exploring that aspect of our own life which we are somehow disconnected from. So this inner technology, you see, technology is always about creating solutions, about empowering people. So what is that knowledge? What are the tools that help us enhance our total well-being? It's not just intellectual well-being, it's not just material well-being, but I would say a technology that helps us become more peaceful, more resilient, more productive in a constructive way, more positive, more compassionate, more kind, and more harmonious. So when we talk of peace, it's not just a experience that is the forte of people who practice spirituality. In a way, spirituality is something that is part of everyone's life. So inner peace means a calm state of mind, the way we think, the way we discern, and the way we take decisions. If that is done peacefully, so much time would be saved. So many conflicts can be avoided.
so much wastage can be stopped. So what is that peace? Which is very proactive, which is very productive, which is very constructive and empowering. So we are going to explore something which is going to enhance both our work life and our personal lives. So I would like to invite you all to be present with a very open mind, and Sister Shivani would be sharing her insights with us all, and after that we will also have an experience of meditation. So welcome to a very empowering, enlightening evening. Thank you. Om Shanti. We would welcome Rama Didi with a planter. It is said that peace is like oxygen to the soul. Like every second we are breathing in and out. So in the same way, peace is like that basic ingredient in my life, like Didi shared. Whatever I'm thinking, deciding in the background, what is my state of mind? So are we looking for a peace of mind or a peaceful mind? We are looking for peace of mind or a peaceful mind. How many for peace of mind? Okay. And peaceful mind? Yeah. So we will definitely be having that. We have taken out time, and we would welcome all of you and thank you to be part of this session, that taken out time on a Sunday evening to be with us. Now I would welcome Shivani Didi on stage. Yeah, we can stand up and give a big round of applause. Didi. She needs no introduction. With this silence meeting of the eyes, we have received the good wishes and the good vibrations from Didi. She is a recipient of the most prestigious Nari Shakti Award, and she is also a Goodwill Ambassador by World Psychiatric Association. She's there, and she has also received Women Decade Achievers Award. This is very few to name what she has done in her life, and she has touched the lives of millions and helping them transform really as an angel of God on earth, I would say in short. So I would request the Vice Principal of Shiv Nadar School, Brother Sameer, to welcome her with planters. So we can all join. He's also presenting a gift to Shivani Didi, which is very special paintings made by the children of the school. No program can begin
begin without the lightning of the lamp. So for this special lightning, we would request our guest of honors to be part of that and come on the stage. I would just announce their names. Shivani Didi, Rama Didi, Mr. Mohit Sinha, DG, Indian Railways, Ministry of Railway, Government of India, Mrs. Anuradha Sinha, we can all join on the stage for lamp lighting. Mr. Sudhir Singla, MLA Gurgaon, his wife, Mr. Dr. Payal Kanodia, Trustee of M3M Foundation, Mr. JB Sharma, President of Federation of Senior Citizens Welfare Forums, Dr. Professor Dheeraj Behel, Additional Medical Superintendent and HOD of Pediatrics, Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi, Mr. Anup Singh, Councillor, Sector 14, Gurgaon, Mr. Sanjay Baveja, Vice President and Audit Head, MR India, Mr. Deepak Bansal, President and Federation of Senior Citizen Welfare Association, Mr. Umesh Delwal, CIO, Daikin, India, Mr. Kailash Gupta, Retired Director, Defense Estate, Western Command, Mr. Sanjeev Kishan, Managing Director, Iris Global Limited, Mrs. Rama Rathi, Councillor, 28th Sector, Annie John Matthew, Vice President and CIO of India, CIO of Mother Dairy, Mrs. Anu Sethi Trehan, Infogain HR, Mrs. Archana Arora, Director, ANTS Digital Private Limited, and Sanjay Arora ji, Brother Manav, Harmita Dev, Brother Sameer, Vice Principal, Shivnadar School, Sukanya Ma'am, Colonel Gopal, CEOs of Shivnadar School, Brother Lawrence, Dr. Deepak Singhal, Mrs. Shashi Banerjee, who is Director of Education for Shivnadar School, Mr. Vikas Dureja ji, Strategic Appliance in India Global, please come on the stage. And we can all join with the torch of our, you can just switch on the torch of your mobile, and we can stand and we can be the part of this lamp lightning. We are all lamps of hope and lights of this world. ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, इस धरती पे अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। Request all the guests to be on the stage for a little while, and you, Shivani Didi and Rama Didi, will give you some godly gifts. So please be on stage, and we can all have our seats.
privilege to have you all with us today evening. This is our global family. So I would also like to give my sincere thanks to the Shiv Nadar School for hosting this event, and we would like to call upon Shashi Banerjee ji, who is the Director of Education of Shiv Nadar School, to receive a token of remembrance from Shivani Didi. Please come on the stage. On the behalf of Shiv Nadar School. So it would not have been possible for this big event. So it's a very beautiful Godfather's incorporeal image. And at the end, but not the least, we would like to honor our dear Shivani Didi. On behalf of the IT Wing Gurugram team, Rama Didi and Anchal Ben are going to present a very beautiful painting to Didi for having given us this valuable time to be with us today. As always, and we can join with a round of applause. She is a sister. Anchal Ben has created this painting. She is the artist. Now we would proceed for the main session and we would listen to the insights from Shivani Didi. Om Shanti.
ओम शांति। सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, सभी सेवाधारी। फोटो, शुक्रिया। Just sit back straight and take 3 deep breaths. Relax the body and bring your attention to the center of the forehead. यहाँ जहाँ हम तिलक लगाते हैं, which is called the third eye, तीसरा नेत्र. This is the energy center, and very gently visualize a little star there. Visualize the stars in the sky. You'll be able to see the star clearly because we've seen it daily. So just look at the sky, look at the stars in the sky, and then come back to the forehead and look at the star there. This energy is I. The energy which creates every thought, every feeling, intention, everything. I am this energy. I am the creator of my life. I am the master of my life. I am a peaceful being. As you hold on to the visual of the star, just gently create this thought: I am a peaceful being. Peace is my nature. Peace is my sanskar. Peace is my personality. Again repeat: I am a peaceful being. And as I create this thought, I am a peaceful being, the vibration of peace radiates through my body. And my body is at peace, it's relaxed. I am untouched by situations and people's behavior. I am a peaceful being. Now see yourself tomorrow
Monday morning, the early morning scene at home after a long weekend. Waking up peacefully. Getting other members of the family to begin the day peacefully. Getting ready, and now driving to work peacefully. People on the road may be my way, may not be my way. I am a peaceful being. And now I have reached my workplace. Scene after scene, different people, different sanskars. Someone is my way, one responsibility to the next through my nature. I am a peaceful being. And now, feel your energy when you return home in the evening tomorrow to your family, to your children. Now you feel the energy. How will it be? And see yourself sitting with them. How would it feel? And now check, how would they feel in your presence, in your energy field, which has created only peace and calm throughout the day. And at the end of the day, when you go to sleep, what's going to be the quality of sleep that day? Om Shanti. How many of you were on that journey? From the morning to the road, to the office, to back home. How many were on the journey? Yes. And how many of you could clearly see everything? Easy. And how many could feel the energy of the day?
Now this is meditation. Is it easy? Was it easy? Can you do it every day now? Can you do this little exercise every day? Yes? How many can do this every day? Simple. What do we do in life every day? We prepare everything for the day, but our preparation is everything outside. But we don't take that 2 minutes to prepare how I am going to be tomorrow, Monday. I prepare what I am going to do tomorrow. So our diary is always a to-do list, right? How many of us know what we are going to do tomorrow? We all know what we are going to do tomorrow. Everyone knows what they're going to do tomorrow. Now, what we are going to do is all planned, it's structured. We also would have given appointments to somebody. It's all very clear what I'm going to do tomorrow. But along with that, I haven't prepared how I'm going to be while I do what I do. Right? Is it important to prepare how I will be while I do what I do? Is it important? Most important is I can plan what I will do, but can I prepare how I will be? Is it my choice? Is it my choice how I will be tomorrow? Your way tomorrow? Will you still be able to be how you chose to be? Yes or no? Even a simple thing like waking up your children in the morning tomorrow. Do you have a choice how you can wake up and then wake them up with peace? And if they react and they say something, will you still continue to be peaceful? अब क्या हुआ? Yes or no? या सोच रहे हो? या वापस आंख बंद करके देखना है? What do we think? Do I have a choice how to be? Pause and ask yourself this question. Do I have a choice how to be? I have a choice what to do. I have a choice, no, tomorrow, Monday morning, what to do. I have a choice. I have a choice what time to wake up. I have a choice where to go, how to drive, which vehicle to choose. I have a choice what to wear. I have a choice what to eat. I have a choice in everything in what to do. Do I have a choice in how to be? Which means, how I'm going to be while I do everything tomorrow, is it completely my choice or it's also dependent on external factors? क्या लगता है? जी? आप बताएंगे ये आंसर? How I'm going to be tomorrow, is it dependent on me or it's also dependent on external factors? अच्छा, both. हाँ जी? It depends on us or depends also on situations? Mix of both. ज़्यादा पावर किसके पास? Me, they. How many of you have the habit of getting disturbed on the road?
So what will happen tomorrow morning? Monday morning, after a 3-day weekend, chutti? It's not going to be easy tomorrow morning. Everybody will be getting late. And then कोई ऐसे आएगा, कोई ऐसे आएगा, कोई इधर से घुसाएगा, कोई उधर से घुसाएगा. And इस सब चीज़ में अगर रेड सिग्नल भी नहीं चल रहा होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ जी? अच्छा, वर्क फ्रॉम होम. हाँ. Again, if I'm choosing to work from home, I'm focusing only on the doing. Because I have a power in what to do and how to do. So if tomorrow morning, quite a few people around me are not my way, the signal is not working, GPS showed in the morning I will reach in half an hour, but now once I'm on the road it's showing 50 minutes, I've already fixed an appointment for 9 a.m, वहाँ से फ़ोन भी आने लग गया है, आप कहाँ तक पहुँचे हो? I am a peaceful being. Possible? Possible? आप बता दो, मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? Possible or not possible? हाँ, possible, not possible. Again, close your eyes. See this scene. कोई इधर से ओवरटेक कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, कोई पीछे से जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है. कोई रेड सिग्नल तोड़ के आगे से निकल गया. एंड कोई तो फ़ोन पे मोबाइल पे बात करते हुए मेरी गाड़ी को जस्ट टच करते हुए निकला अभी. कुछ भी सही नहीं हो रहा है. I am a peaceful being. देखें अपने आप को in that scenario where everything that I had planned to do is not going my way. मेरा doing मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहा है. And now just check. The doing is not in my control right now. Is the being in my control? करते हुए देखो वहाँ पर अपने आप को. Because whatever you will see right now is a coding that's getting created on your subconscious. Coding आज होगी, बटन कल प्रेस होगा, आउटपुट कल दिखाई देगा. ओके, अब आंखें खोलो. आपको दिखा, the doing was not my way. I had visualized I will leave at 7:30 a.m. in the morning. The highway will be empty. मैं 25 minutes में पहुंच जाऊंगी. I visualized all my doing and I planned accordingly. It takes one scene for everything outside to change in 1 minute. होता है कि नहीं होता ऐसा? And it's not just about the journey on the road. It's about the journey of our life. एक scene और सब कुछ बदल जाता है. पिछले 3 सालों में हमने कितना कुछ बदलते हुए देखा है अचानक. देखा है या नहीं देखा है? कितने प्लान्स बनाए होंगे, कितना सोचा होगा, ये करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे. सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया. तो डूइंग के लिए हम सोचते हैं कि दिस इज़ ऑल इन माई कंट्रोल, एंड समटाइम्स इट इज़, बट समटाइम्स इट्स नॉट. Because the doing is not about me alone. The doing is lot of other energies along with me. So even if I plan a doing that tomorrow morning I will wake up and I will cook a very tasty breakfast for the family and they will love it and they will appreciate me, it still doesn't need to be that way because it will all depend also on them. The doing हमें लगता है हमारे कंट्रोल में है, लेकिन काफ़ी हद तक वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. बिकॉज द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जीज, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ सिचुएशंस, एवरीथिंग.
हमने सोचा कल सुबह मौसम बहुत अच्छा होगा and suddenly ज़ोर से बारिश हो रही है. It's not in my control. So we have actually grown up believing that the doing is in my control. But actually the doing is not in my control. And we have grown up believing that the being is not in my control. लगता है कि नहीं ऐसा? Because what does our vocabulary say always? I'm feeling like this because of. भाषा क्या है हमारी? I'm feeling like this because of. आपको याद है स्कूल में in those days we used to be asked to write an essay, happiest day of your life. आपने लिखा happiest day of your life? पता नहीं आजकल पूछते होंगे कि नहीं, इतनी छोटी छोटी आजकल भी पूछते हैं happiest day of your life. अच्छा फिर ठीक है. Then it's important that we change and we teach them how to write that essay. Because we wrote that essay saying that the happiest day of my life is when जब बाहर कुछ अच्छा हुआ था. And that's where the programming happened in the child. That the happy days of my life is when something good happens outside. And automatically ये भी coding हो गई कि when something right does not happen, then it is natural to be unhappy. यही coding हुई थी ना? That was the happiest day of my life. This was the saddest day of my life. Everything depended on outside. So which means हमने क्या programming कर दी? That the being is dependent on the being is dependent on the doing. And then we said, I am the energy, I am the master, I am the creator. अपना left hand आगे करें and place the doing on that and place your mind on the right hand. The doing means everything that you do every day. People involved, family, work, colleagues, friends, everything is on the left hand and my mind is on the right hand. And बहुत साक्षी होकर देखें as a detached observer, do all these people influence my state of mind? Or I can be who I can be irrespective of what's happening on my left hand. क्या लगता है? कितनी पावर है? अच्छा, आज के संडे कैसा रहा आपका? किस किस का माइंड एकदम पीसफुल था आज सुबह से 5 बजे तक? अच्छा, कुछ 1 मिनट भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? अच्छा, 1 मिनट हुआ फिर? अच्छा, इसलिए ठीक कर लिया आपने फटाफट अपने आप को. So the first practice that we are going to start today, it's a little deep. Right now it will look, it's very simple, but when we start practicing it and are aware of what's happening, we will realize how deep-rooted the dependency is. Our vocabulary goes, I'm irritated because of, where does the finger go? I'm upset because of, where does the finger go? Outside. I'm happy because of, where does the finger go? Outside. I'm hurt because of, I'm disturbed because of, I'm worried because of. Everything that I'm feeling here, I'm saying it's because of, and which means that the being is dependent on the outside world is what I believe. And so when I keep saying, I'm feeling like this because of, 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 every time I'm saying it, I'm reaffirming the coding that everything that's created here is because of. And so the second thing gets reaffirmed, that for me to be peaceful and happy, what needs to be perfect? For me to be peaceful and happy, which means for me to be perfect here, what needs to be perfect? And everything needs to be perfect according to my definition of perfect. वैसे तो सब कुछ perfect ही चल रहा है. How many of you have a perfect spouse? None of you have a perfect spouse.
Is your spouse has come with you over here for the program? Now let's ask them whether they have a perfect spouse. Now, when we say perfect spouse, it actually means perfect according to my definition of perfect. And which means they will have those sanskars which I believe are perfect. And then first I want a perfect spouse, then I want perfect children, then I want a perfect workplace, then I want perfect weather, then I want a perfect world. And when everything is perfect, obviously I will be peaceful. वो परफेक्ट हो नहीं रहा और डे बाय डे मेरी पीस क्या होती जा रही है, उसके पीसेस ही होते जा रहे हैं. एक्चुअली यहाँ की शांति के तो टुकड़े छोटे छोटे हो चुके हैं. बिकॉज एवरी स्टिमुलस एंड देयर इट गोज ट्रिगर. नाउ इक्वेशन. We are going back to school. We are in school, so we are going to go back to school. Equation. A perfect world will create a perfect mind, or a perfect mind will create a perfect world. फिर से सुन लेना. A perfect world will create a perfect mind, or a perfect mind will create a perfect world. अच्छा, तो हमें तो इक्वेशन पता है फिर कैसे गलती? सो टुडेज फर्स्ट इक्वेशन. इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है. इट्स अ स्पिरिचुअल लॉ एंड द लॉ इज कॉल्ड संकल्प से सृष्टि बनती है. संकल्प से सृष्टि बनती है. सृष्टि मीन्स माई वर्ल्ड. एंड वॉट इज माई वर्ल्ड? माई वर्ल्ड इज फर्स्ट माई फीलिंग्स. दिस इज माई वर्ल्ड ना. यहाँ पे क्या हाल चाल है? दिस इज माई वर्ल्ड. Then my world is the health of my body. Then my world is my family. Then my world is my workplace. Then my world is my social circle. And then keep on expanding it to the world. So Sankalp se Srishti means my thoughts create my world. Now what will happen if I go against the law? The law is my thoughts create my world. And we are living saying, My world creates my thoughts. तो जब इक्वेशन ही ऑपोजिट हो गई तो कोई आंसर करेक्ट निकलेगा? आंसर करेक्ट निकलेगा? हाँ. तो हमें स्कूल में करना क्या होता था? सिर्फ इक्वेशंस याद करके जानी होती थी. ये थोड़ी पता होता था कौन सी वाली प्रॉब्लम आने वाली है. Get your equations right. That's what we were told. Just learn up your equations. And once I get the question paper, all I had to do on the first line was write my equation. And once I write the equation, I will reach the answer because my equation is correct. But if my equation is wrong, can I reach the answer ever? No. And that's what's happening in life. हमारा फंडामेंटल सबसे पहला इक्वेशन ही गलत है. हमने इक्वेशन बना दिया जैसी दुनिया वैसी स्टेट ऑफ माइंड. सो रेडी टू चेंज द इक्वेशन? रेडी टू चेंज द इक्वेशन? यस. आपने कहा परफेक्ट माइंड विल क्रिएट अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड अ स्ट्रेस्ड माइंड विल क्रिएट अ डिस्टर्ब्ड वर्ल्ड. इफ आई एम हेल्दी देन आई विल बी हैप्पी, और इफ आई एम हैप्पी देन आई विल बी हेल्दी. If I am healthy, then I will be happy, or if I am happy, then I will be healthy. Yesterday we were at the retreat center and a brother shared his example in the class at the end of his retreat. They had come for just one day and he said, वो आजकल हम घड़ी पहनते हैं ना जो हमारे state of the body बताती रहती है हमारे को. So he said, normally my, I think, pulse is around 100 something. And he said, yesterday I went and sat in the pyramid, which is the meditation room. And he doesn't know how to meditate. वो तो एक पहले दिन ही आए थे कल. He doesn't know how to meditate. Neither was he sitting in the meditation room for some hours, just a few minutes. 10-15 minutes they had to do an exercise in the pyramid. And he said, after that, that pulse was showing between 65 and 70. Who influenced whom? Who influenced whom? The mind
influences the body. Why? Because this is matter. ये physical है and ये क्या है? ये energy है. So every time I create a thought, it's a vibration, it's an energy and it travels through my body. And अब क्या हो गया है? Once in a while disturbed, once in a while irritated, it's okay, the body was taking it. But now that has become more or less our normal state of mind. भाग भाग के काम करना, हमेशा लेट हो रहे हैं, हमेशा हरिड, ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, कुछ भी नहीं हुआ तो थोड़ा इरिटेट हो जाना, इम्पेशेंट होते जाना. दिस इज नॉट हैपनिंग वंस इन अ वाइल नाउ. इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. एंड नाउ वी कैन नॉट इवन मेक आउट दैट एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग दैट डिस्टर्ब्ड इमोशन, देयर इज अ डिस्टर्बेंस दैट इज गेटिंग क्रिएटेड ऑन दिस बॉडी. And so we are working so hard to create perfect health, perfect diets, perfect exercise regime, everything perfect. And फिर भी because we are not taking care of a perfect mind. तो संकल्प से सृष्टि बनती है. So my thoughts create my physical health, which means diet is important, exercise is important, but it's incomplete. अगर आप कल का दिन सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना, विच इज़ वेरी ईजी, आप कल का दिन सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना कि हर चीज़ थोड़ा सा आराम से करना. दिख रहा कैसे? मतलब हम हर चीज़ फास्ट फॉरवर्ड मोड में करते हैं. आजकल तो ऐसे हो गया, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो उसको भी नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखते. राइट के नहीं? पेशेंस नहीं है आराम से सुनने की, तो सुनो ही मत. सुनना भी है प्लस उसको +2 पे करके फटाफट करके देख लेते हैं. बिकॉज हमने सोचा कि देखना मीन्स आई जस्ट हैव टू लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. वी डोंट हैव टू लिसन. We have to allow our mind to slow down and be calm and then reach that stage of stability. लेकिन हर चीज़ जल्दी, तो आप ये सोचो कि हर बार हमारा माइंड जल्दी करेगा तो हमारी बॉडी पर असर होगा या नहीं होगा? तो कल थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड का ऑपोजिट क्या होता होगा? वर्ड स्लो मोशन. हाँ ठीक है. तो कल, और स्लो मोशन ऐसे नहीं मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं, जस्ट नॉर्मल करना है सब कुछ. नॉर्मल वॉक, नॉर्मल. Once in a while getting late is different. Again remember the body can take an impact of once in a while. कि हाँ मुझे फ्लाइट लेनी है थोड़ा लेट, वैसे उसमें भी कभी लेट होने की ज़रूरत नहीं है if everything is planned before time. This is also a sanskar which will keep your mind peaceful and your body healthy. Never aim to reach anywhere on time. Always aim to reach before time. It will give you a peaceful mind and a healthy body. लेकिन हम ही अगर जीवन में कट टू कट चलते रहेंगे, हाँ पहुंच जाएंगे, फिर लेट हो रहा है, फिर रास्ते में लेट हो रहा है, बार बार घड़ी देख रहे हैं, बार बार GPS चेक कर रहे हैं, what is going to happen to the mind and the body? और हाँ एक दिन नहीं ना, हर रोज़ ही कहीं ना कहीं के लिए लेट हो रहा है. जस्ट क्रिएट अ सिंपल संस्कार. आई विल रीच एवरीवेयर 15 minutes बिफोर टाइम. कैन वी रीच 15 minutes बिफोर टाइम? हाउ विल वी रीच बिफोर टाइम? वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम. इट्स ओनली अ प्रोग्रामिंग हियर. आपको पता है जब हम लेट होते हैं वी एक्चुअली अफेक्ट द एनर्जी ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू. वी अफेक्ट हियर, we affect here, even the way we speak, our body language, everything changes. And it's a very hurried, turbulent energy that is radiating everywhere. और ये तो बहुत easy संस्कार है चेंज करना. करें कल से, स्लो नहीं, नॉर्मल मोड पे चलें कल से. करें, ये easy है. सिर्फ क्या करना है? Tomorrow morning we'll wake up half an hour early.
पॉसिबल? देखिए जी, पीस एंड हेल्थ फ्री में नहीं मिलते, थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही सिर्फ बोलने से नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ता है। आज आप पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? हाउ हार्ड डू यू वर्क टू अर्न द मनी एंड ऑल द कंफर्ट्स दैट यू वांट टू बाय? कितनी मेहनत करते हैं? सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। एंड ऑल दैट हार्ड वर्क एंड दैट एफर्ट इज ओनली टू बाय ऑब्जेक्ट्स. In spite of all that effort and that hard work, and in spite of having bought everything that I wanted to buy, I haven't been able to achieve peace and happiness. Because while buying, I was creating turbulent energy. ठीक है? First, tomorrow everything will happen at what speed? Normal. Normal उठेंगे. First उठते ही लेट है. उठते वाली first thought लेट हो गया. तो कल सुबह पहली थॉट, वी आर प्रिपेयरिंग अ पीसफुल डे टुमारो. फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग क्या होगी? फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग क्या होगी? आई एम अ पीसफुल सोल. याद दिला देंगे अपने आप को कल. आई एम अ पीसफुल सोल. सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करना. शुक्राना. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. क्योंकि शुक्रिया इज अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. शुक्रिया इज एन एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस. शुक्रिया इज एन एनर्जी ऑफ क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद एवरीथिंग एंड एवरीवन. शुक्रिया इज अबाउट एक्सेप्टिंग पीपल एंड व्हाट लाइफ इज गिविंग मी. शुक्रिया इज अबाउट बीइंग कंफर्टेबल थ्रू एवरी सीन ऑफ द डे. तो सुबह सुबह सबसे पहले किसका शुक्रिया करेंगे? ठीक है, सबसे पहले उसका शुक्रिया. शुक्रिया नॉट ओनली बिकॉज लाइफ इज गोइंग परफेक्ट. शुक्रिया इवन इफ नथिंग इज गोइंग परफेक्ट. Our gratitude is not dependent on what is happening in our life. Our gratitude is our संस्कार. तो अगर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो तो शुक्रिया कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ. तो छोटे बच्चे की तरह कल से शुक्रिया बोलना शुरू करते हैं. जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो. कल से अपने को सिखाते, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो. तो थैंक यू बोलो. तो फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो फर्स्ट थॉट ग्रैटिट्यूड. सेकेंड थॉट ग्रैटिट्यूड टू द सेल्फ. अपने मन और शरीर के साथ एक अच्छा सा रिश्ता बनाएं. शुक्रिया करें उसका सुबह सुबह. सारा दिन उसने बहुत काम करना है. तीसरा शुक्रिया लोगों के लिए, ऑल द पीपल ऑफ योर लाइफ. चौथा शुक्रिया नेचर, प्रकृति. एंड पांचवा शुक्रिया objects, matter, everything that is going to be for me today throughout the day. आपको पता है हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं एक दिन के अंदर? आज हम यहाँ हैं. हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर वर्किंग फॉर अस? कर रहे हैं नहीं काम इतनी सारी चीज़ें. अब सिर्फ ये माइक ही चलना बंद हो जाए तो वी विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट वी वांट टू डू. लेकिन क्या हम इसका कभी शुक्रिया करते हैं? कभी शुक्रिया करते हैं? नहीं. आपने कभी अपने फ़ोन का शुक्रिया किया? नहीं. लेकिन जिस दिन खराब होगा ना, क्रिएट अ रिलेशनशिप विद एवरीथिंग एंड एवरीवन. मैटर ऑल्सो रिसीव्स वाइब्रेशंस. अगर आप अपनी जड़ चीज़ों को भी शुक्रिया करेंगे, विच मीन्स एवरीथिंग दैट यू यूज़, वो चीज़ें हमेशा आपके साथ कोऑपरेट करेंगी. इट्स अ रिलेशनशिप. आप कार से उतरते हैं, शुक्रिया.
आप एसी को ऑफ करते हैं, शुक्रिया कल सारी रात वो चला तब आप अच्छे से सोए थे। पानी आता है कल घर में, शुक्रिया, बस शुक्रिया शुक्रिया करते रहो, वैसे ही अच्छा लगता है। मैटर ऑल्सो हैज़ अ रिलेशनशिप विद अस। एक्सपेरिमेंट विद दिस एंड द बेस्ट थिंग दैट विल हैपन विल बी, अगर आप सब चीज़ों को शुक्रिया शुक्रिया करते रहेंगे, आपकी स्टेट ऑफ माइंड इतनी एक्सेप्टेंस पर पहुंच जाती है कि इवन इफ समथिंग इज नॉट योर वे, comfortable, because I have created a vibration here with everything. और अगर शुक्रिया नहीं करते हैं तो फिर शिकायत करना नेचुरल हो जाता है, बिकॉज दोनों में से एक संस्कार तो चलेगा. सो नाउ चेक unaware how many things I complain about during the day. ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं. एंड एवरी टाइम आई कंप्लेन, शांति भंग हो जाती है. सो शिफ्टिंग, फर्स्ट प्रोग्रामिंग, शिफ्टिंग from an attitude of complain to an attitude of gratitude. करें कल शुक्रिया सबको, और जो लोग हमें तंग कर रहे हैं उनको, जो लोग हमें तंग कर रहे हैं उनको, अच्छा उनको ज़्यादा शुक्रिया. बट उनको जाकर शुक्रिया नहीं बोलने की ज़रूरत है. वो बोलेंगे हाँ इनको क्या हुआ चाहिए, इनको क्या चाहिए आज. Shukriya is not about going and saying to everything in the world. I am not going to get up and then say Shukriya to this mic in my words, but I have to say it in my thoughts. So we don't go thank you, thank you, thank you like this throughout the day. It's here. It's a vibration that we are creating. The people who have any kind of an issue with me, so there are people who have problems with me, right? So if people have any problems with me, they are not creating the best energy about me. ये तो डन है, ठीक है. सो नाउ अब उनको सामने लेकर आइए एंड विजुअलाइज दैट दे आर नॉट क्रिएटिंग द बेस्ट एनर्जी अबाउट यू, विच मीन्स दे आर एंग्री विद यू, दे आर हर्ट विद यू, दे आर नॉट हैप्पी विद यू, वट एवर, दे आर इन पेन बिकॉज ऑफ समथिंग. तो बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटिंग द राइट एनर्जी अबाउट मी, उनकी तरफ से मेरे पास कौन सी एनर्जी आने वाली है, कौन सी एनर्जी आने वाली है, लोअर एनर्जी. And now, if I don't create my protection shield, उनकी वो लोअर एनर्जी मुझे पता भी नहीं चलता कितनी मेरे पास आ रही है, एंड मेरी एनर्जी को क्या करती जा रही है, खींचती जा रही है. सो समटाइम्स यू आर गोइंग टू बी फीलिंग लो विदाउट एनी रीजन. होता है ऐसा कभी? यस, बिकॉज समवन एल्स इज क्रिएटिंग अ लो एनर्जी फॉर यू. Reason could be that I have done something, and the reason could be they are going through something. But someone is creating a lower energy for me, and if somebody keeps radiating lower, they are not sending the lower energy to me, they are just creating lower energy about me. But because they are creating lower energy about me, that lower energy is going to come to me. And because that lower energy is going to come to me, it is going to enter into my energy field, and वो मेरी energy field को क्या कर देगा, थोड़ा सा नीचे ले जाएगा. Sometimes we are feeling good without any reason, and which also means someone somewhere is extremely happy for me, about me. दुआएं भेज रहे हैं कोई हमारे को, मुझे पता नहीं आज मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, आ रहा है कहीं से. So when someone is not sending the right energy to me, it's very important for me to create my, and which means वहाँ से अगर lower energy आ रही है तो यहाँ से कौन सी energy जानी चाहिए? To counter a lower energy, what do I need to send? A higher energy. So my higher energy will counter their lower energy. It's like वो जब हम टीवी पे देखते थे ना रामायण महाभारत, एक शस्त्र यहाँ से जाता है तो सामने वाला देखता है वो कौन सा वाला फेंक रहा है यहाँ से, और यहाँ से फिर वो कौन सा वाला फेंकते हैं, एंड यहाँ से वो वेपन आएगा, यहाँ से वो वेपन आएगा, एंड दोनों में से जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो मिड एयर दूसरे को क्या कर देगा. तो विजुअलाइज कि वहाँ से लोअर एनर्जी आ रही है,
Lower energy could also be from your spouse. Because कल हमने कुछ ऐसा किया था, because she is not emotionally independent, she is still dependent on your behavior and she is in pain. And फिर हमने अपोलोजाइज भी नहीं किया घर से निकलने से पहले, तो पूरा दिन क्या आने वाला है? So vibrations of people literally can suck our energy. इसलिए सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कहीं इन्वेस्टमेंट्स की नहीं हुई ऐसी वाली। एंड दूसरा, अगर कभी भी किसी का भी मूड हमारी वजह से ठीक नहीं है, उनको लगता है कि हमने ऐसे कोई गलती की है, तो प्यार से उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करना चाहिए अपोलोजाइज करके। अपनी ईगो को इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए, वाई शुड आई अपोलोजाइज, आई शुड अपोलोजाइज सो दैट पेन स्टॉप्स फ्लोइंग टू मी। अपोलोजाइज करने में कितना टाइम लगता है? क्या लगता है? एंड जैसे ही हमने अपोलोजाइज किया, सामने वाले का माइंड क्या होने लगा? सेटल होने लगा। और जैसे ही सामने वाले का माइंड सेटल होने लगा, मेरे पास आने वाली एनर्जी चेंज हो गई। कितना इजी था पीसफुल होना। कर सकते हैं? कर सकते हैं? Do you think there's anybody on your list that you do, whom you do need to apologize to? है कोई आपकी लिस्ट पर? आज रात को सोने से पहले फ़ोन कर देना, मैसेज कर देना, और अगर दोनों नहीं हो सके कम से कम यहाँ से भेज देना। कभी कभी अपने आप से पूछना चाहिए, इतना मुश्किल क्यों लगता है मुझे अपोलोजाइज करना? ये भी एक मसल है जो एक्सरसाइज नहीं हुआ होता। तो बेंड करने में क्या होता है? थोड़ा सा दर्द होता है, बट होने दो दर्द, क्योंकि अभी भी अगर बेंड नहीं करेंगे तो स्टिफनेस क्या होती जाएगी। सो जस्ट बेंड, लेट इट हर्ट, लेट इट हर्ट, बेंड। 2-4 बार बेंड होने के बाद, 2-4 बार बेंड होने के बाद वो ठीक हो जाएगा। सो अपोलोजाइज not because I have made a mistake, because sometimes it is also possible that I have not made that mistake but someone else is hurt. होता है ऐसा? It doesn't happen always. ऐसे नहीं सोचना हम कभी गलती नहीं करते। But sometimes what I did, what I said was fine, but it was not as per the expectation of the other person, and so they will create hurt. So then I can phrase my apology properly. Don't do a fake apology. कि हाँ सॉरी, ऐसा हाँ सॉरी एहसान नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। डोंट गो एंड जस्ट पुट, जैसे किसी को फेंक ना, हाँ ये लो खुश रहो, ऐसा नहीं। इट्स अ वाइब्रेशन, इट्स एन एनर्जी, इट्स एन इंटेंशन। So if I have made a mistake, I apologize for my mistake. In case I believe that I have not made a mistake, I can at least say, you know what, I still don't think I was wrong, but I apologize because what I did has caused you pain. कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। सामने वाला इमीडिएटली ठीक नहीं होगा, बिकॉज सामने वाला wants you to believe that you are wrong. यही हमारी ईगो टसल्स चलती रहती है। लेकिन we need to start radiating that energy that I really care and I do want you to come out of your pain. तो apologize करना, which means creating a संस्कार of peace. झुकना सिखाता है हमें। झुकना चाहिए, झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। आज करिएगा, करिएगा। जैसे ही आप करेंगे, इट विल मेक यू फील लाइटर इन सम टाइम। आपको पता ही नहीं चलेगा वाई एम आई फीलिंग लाइटर, बिकॉज समवन समवेयर देयर इज नाउ फीलिंग लाइटर। और इसलिए अपोलोजाइज करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला तब तक ठीक नहीं हो रहा है, और हो सकता है इस बात को 1 दिन हो गया हो, कई बातों को 1 महीना हो गया है, एंड दे आर स्टिल इन पेन।
So never keep these energy investments around you where people are in pain for some reason. Because then how much ever I try, it's difficult to be peaceful. Because वो दर्द आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है मेरे पास. हाँ, तो फिर ईगो या पीस एक ही रह सकते अपने पास. ईगो हमारी पावर को डे बाय डे घटाती जा रही है. ईगो मुझे बेंड नहीं करने देती, मुझे कैसा करती जाती है, मैं क्यों झुकूं. बोलते हैं ना हम, मैं क्यों झुकूं. तो क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, आंसर. मैं क्यों झुकूं, आंसर. बिकॉज वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है. बट मैं ही हर बार झुकूं, हाँ मैं ही हर बार झुकूं, बिकॉज इट्स गुड फॉर माई हेल्थ. बेंड बेंड बेंड. डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड, जस्ट बेंड. दोनों में बहुत फर्क है. झुकना, झुकना मतलब अपोलोजाइज करना. झुकना मतलब कुछ हो गया उसके बाद पहले मैं बात करूं. किस किस के घर में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बाद थोड़े टाइम साइलेंस चलता है. नॉर्मल है बोलते हैं हम, ये तो नॉर्मल है. एंड ड्यूरेशन कितना होता है वो साइलेंस पीरियड का, कितना है आजकल. हाँ जी, कितना है ड्यूरेशन पीरियड. हाँ जी, 2 व्हाट, 2 डेज. अच्छा, तो अब मुझे देखो 2 सेकेंड्स हो सकता है, 2 मिनट्स हो सकता है, 2 आवर्स हो सकता है, 2 डेज. ठीक है, इट्स ऑलवेज 2 डेज. एवरेज ऑलवेज 2 डेज. देखा, हर एक का फिगर भी फिक्स्ड है. हाँ हाँ, मोस्ट ऑफ अस हैव डिसाइडेड हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू बी इन साइलेंस. सो 2 डेज. एनीबडी मोर देन 2 डेज? ओह, अब इसका मीनिंग क्या है? So what is the time dependent on? If it's parents, then how long? Acha, 2 minutes. And if it's your spouse, then how long? No comments. Acha. So when am I going to be normal? Depends on, you're seeing the vocabulary? Depends on, डिपेंड्स ऑन वो कौन है, डिपेंड्स ऑन उन्होंने क्या किया था, डिपेंड्स ऑन गलती कितनी बड़ी थी. इट डिपेंड्स ऑन एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर 2 डेज से कुछ ज़्यादा किसी का है फिगर? कितना? 5-6 दिन. क्या करते क्या है 5-6 दिन फिर? हाँ, 5-6 दिन चल जाता बिना घर पे बात किए हैं. आपके साथ घर से आए कोई साथ में आज? अच्छा, फिर आप बात करती हैं कि आप भी बात नहीं करती? अच्छा, आप भी बात नहीं करते 5-6 दिन, हैं जी? अच्छा, ये बात नहीं करती 5-6 दिन. ओह, लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी ऑफ द हाउस व्हेन वी डू दिस. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉर्मल. नॉर्मल है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? यस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉर्मल. संस्कार स्वभाव बीइंग डिफरेंट इज नॉर्मल. डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग बीइंग डिफरेंट इज नॉर्मल. बिहेवियर समटाइम्स ऑफ द अदर पर्सन बीइंग इरैटिक इज ऑल्सो नॉर्मल. आर्ग्यूमेंट कभी कभी हो जाए, वो भी हो जाता है. दैट आर्ग्यूमेंट कैन गो ऑन फॉर 5 minutes, sometimes an hour, sometimes even more than that. Sometimes we will come to a solution, sometimes we will not come to a solution. But what is the logic behind keeping silent after that? Because the silence then is only in the verbal communication, the mind becomes very noisy after that. होता है या नहीं होता? जब हम यहाँ से चुप होते हैं in a negative way, मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है. But मौन की शक्ति means the mind is becoming silent. But when I just stop talking from here in a negative manner, तो मन की स्पीड क्या हो जाती है? मन की स्पीड क्या हो जाती है?
बहुत फास्ट चलती है. You know why? Because the mind goes and races and rewinds to all the situations of my life. उस दिन भी ऐसा किया था, उस दिन भी ऐसा किया था, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, everything is rewinding. इतना शोर मचता है यहाँ पे, और ये सारे शोर की एनर्जी किसके पास जाती है? ये सारे शोर की एनर्जी किसके पास जाती है? सबसे पहले कहाँ जा रही है? यहाँ. फिर कहाँ जा रही है? मेरी बॉडी को. फिर कहाँ जा रही है? उनको. फिर कहाँ जा रही है? उनकी बॉडी को. फिर कहाँ जा रही है? अगर उस घर में बच्चे हैं तो उनको. और फिर कहाँ जा रही है? उस घर की हवा के अंदर. इतनी सब हैवी एनर्जी, और वो भी किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए. ठीक है? इज इट राइट टू डू दैट? तो अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी जाता है तो हमें कितनी देर में नॉर्मल होना चाहिए? कितनी देर में नॉर्मल होना चाहिए? आप बताइए. यू नो, इट्स ऑल अ कोडिंग. अगर मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन डाल दी कि 2 घंटे के बाद बात करेंगे, तो 2 घंटे के बाद बात करेंगे. अगर मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन डाल दी 2 दिन के बाद करेंगे, तो 2 दिन के बाद बात करेंगे. और अगर मैंने इंस्ट्रक्शन डाल दी, बात हो गई, अब बात करेंगे. उस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, बाकी बातें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इज द हेल्थ ऑफ द अदर पर्सन इम्पोर्टेंट टू यू? Visualize. Is the health of the other person important to you? Sister, उठना जरा 1 मिनट. 5 days. No, not you, she. हाँ. Spouse, no? Is his health important to you? If tomorrow anything happens, are you ready to do anything for him? Sure. तो बस आज इसे इतना सिर्फ कर लो कि immediately normal हो जाना. सबने ताली भी बजा दी आपके लिए. कैन यू डू इट? श्योर? अच्छा, यू हैव सीन ऑलरेडी ना, तो फिर भी नहीं आपने चेंज किया है ना अभी तक. आप खुद ही सोचो कितना हमारी बॉडी और माइंड के अंदर कितना नेगेटिव टर्मोइल चलता है उतनी देर के अंदर. बच्चे हैं घर पे? नहीं है, अभी आने हैं. फिर तो उससे पहले चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा संस्कार. यू नो व्हाट हैपेंस? Children learn the way of living, and tomorrow when we don't do things their way, then they will also use the same method. कि वो भी बात करना बंद कर देंगे, because उन्होंने सीखा ही वो होगा that this is the way to live life, कि जब कुछ मेरे अनुसार नहीं हो, stop talking. उससे क्या solution निकलता है? Only heavy energy. It is very toxic energy which gets created when we have these long periods of silence. तो दिस इज ऑल्सो जस्ट अ संस्कार, दिस इज ऑल्सो अ कोडिंग. बात हुई, लड़ना लुड़ना था तो लड़ लो, वैसे तो लड़ाई होगी नहीं अगर शांत रहेंगे तो. फिर भी अगर हो गई तो हो गई. नेक्स्ट सेकेंड नॉर्मल. उस टॉपिक पे फिर से बात कर लेंगे बाद में. वी थिंक कि साइलेंस विल हील थिंग्स. एक्चुअली इट इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल विच हील्स थिंग्स. जितनी देर साइलेंट रहते हैं ना, बहुत हैवी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है. एंड प्लीज रिमेंबर, इट्स ऑल्सो टेकिंग अ टोल ऑन द बॉडी. इस समय हमारी बॉडीज इतनी स्ट्रांग नहीं है. अगर इतनी स्ट्रांग होती तो फिर इतना डायबिटीज, इतना हाइपरटेंशन, इतना ये कार्डियक इश्यूज, ये सब नहीं होते. तो इस समय हमें अपने और दूसरे की फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है. तो अगर मन के लिए नहीं, तो जस्ट क्रिएट अ थॉट, वाई शुड आई बेंड? आई शुड बेंड फॉर माई हार्ट एंड हिज हार्ट. बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? किस किस को अपने हार्ट का ध्यान रखना है? रखना है ना. फिर सुन रहे हैं ना रोज क्या हो रहा है? किस किस ने सुना है इस पूरे 2 महीने में क्या क्या हुआ है? डू यू नो एनीबडी हु हैज एक्सपीरियंस्ड अ कार्डियक इशू इन द लास्ट फ्यू मंथ्स? यस. Which means, and every time we are asking the doctors, why is this happening? Why is this happening? They are saying all the stress that got created during COVID time. तो
ऑलरेडी वी आर गोइंग थ्रू अ वल्नरेबल सिचुएशन. अब छोटी छोटी बातों को बड़ा करना बंद करें, बड़ी बड़ी बातों को छोटा करना शुरू करें. इट्स टेकिंग अ टोल ऑन द बॉडी. जब तक इट वॉज टेकिंग अ टोल हियर हम फिर भी चल रहे थे, बट नाउ इट्स टेकिंग अ टोल हियर. If anything happens to the other person, you are ready to sell your house for their treatment, right? तो घर ना बेचो, सिर्फ थोड़ा सा झुक जाओ, बस सिर्फ थोड़ा सा झुक जाओ. मैं बात करती हूँ पहले. So who's going to take this sanskar that I will be the first person to start the conversation? हाँ हाँ, तो लेने दो ना. एडवांटेज क्या प्रॉब्लम है? अपने ही है. भाई अपने लोग अपना एडवांटेज नहीं लेंगे तो कौन लेने वाला है फिर? हमें बड़ा डर लगता है कि सामने वाला मेरा एडवांटेज लेगा, कि यही आएंगी बात करने के लिए. इफ समवन कैन टेक गारंटी, दुनिया में हम हर चीज़ गारंटी कार्ड के साथ लेते हैं. If someone can take guarantee of your personality, कि चाहे कुछ भी हो जाए यही आएगी पहले बात करने के लिए, then pat your back, I have achieved. Somebody can take guarantee of my personality. इससे बड़ी अचीवमेंट तो कोई हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती. अगर कोई दुकानदार आपको बोले ये प्लेट फेंक के देख लो कितनी भी जोर से, ये टूटेगी ही नहीं, तो हम उसको बोलते हैं ना तोड़ के दिखाओ, कहता टूटेगी ही नहीं. दिस इज़ हाउ माई पर्सनैलिटी शुड बी. फेंको जितना ज़ोर से फेंकना है, हम नहीं टूटेंगे. दैट इज़ गारंटी, दैट इज़ गारंटी. क्यों टूटेंगे हम? और अगर हम चाहें तो अपने आप को इतना फ्रजाइल बनाते जा रहे हैं, इतना फ्रजाइल बनाते जा रहे हैं कि एक इतना किसी ने देखा, इसने मुझे ऐसा देखा क्यों, अभी तो बोला कुछ नहीं. सो इट्स आवर चॉइस. I can make myself however strong I want. I can make myself however fragile I want. Doesn't matter, let other people take me for granted. I need to do all this for myself, not for anybody else. इसमें शक्ति किसकी बढ़ने वाली है? इसमें शक्ति किसकी बढ़ने वाली है? हमारी बढ़ने वाली है. So who's going to be the first person to initiate the conversation? I. Every time I? Who's ready to say every time I? Always. Is your spouse sitting with you? Most of the time तो communication वहीं बंद होता है. Is your spouse sitting with you? Yes. And now you're giving a personal guarantee card that every time I. थोड़े दिन लगेगा, अगर पुरानी आदत थी, थोड़े दिन के बाद आपको फील भी नहीं होगा कि आप कुछ कर रहे हो, because it would have become your sanskar. It just takes a couple of times to convert something into a sanskar, and once it becomes a sanskar, it's my auto mode of living that way. The whole world will know कि इसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, ये तुरंत बात करती है. That's my sanskar, and the whole world knows. थोड़ा सा भी कुछ हो गया ना, अब ये 4 दिन बात नहीं करेंगे. It's a sanskar. And then don't use that sanskar only at home. Use that sanskar at work. Use that sanskar with your neighbors. Use that sanskar with everybody, because that is your sanskar. Doesn't depend on other people. So when we say, when will I do this? The answer is not depends on, because it depends only on one person. And when I immediately bend and I change and I create a normal communication, I have not just released my trauma and hurt, I have shifted the energy of the house. Do you want your children to become emotionally strong? Yes or no? ये आजकल तो इतने बच्चे बोलते हैं I'm feeling very anxious. पता नहीं उनको एंग्शियस का मीनिंग पता है कि नहीं, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, बट वर्ड तो ऐसे यूज़ करते हैं इधर, आई एम फीलिंग वेरी एंग्शियस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, बिकॉज हम जितने फ्रजाइल हैं वो उससे कई ज़्यादा फ्रजाइल बन रहे हैं. बन रहे हैं ना. तो डू यू थिंक इतना फ्रजाइल बनाकर यू आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द वर्ल्ड 20 years from today?
The world 20 years from today needs fragile people or powerful souls? You sure? Yes. So then make them powerful. Make them powerful, and the only way to do that is to strengthen the self. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो घर में रोज़ हो रही है ना, इनको चेंज करना पड़ेगा. First and foremost thing, to understand that everybody has different sanskars, different perspective. No two people can be identical. Even to expect the other person to be my way is not right. By now we should know the sanskars of each other. Yes? Within family, do we know the sanskars of the other person around us? Yes or no? Yes. So बार बार उसी संस्कार पे क्या डिस्टर्ब होना है? कोई नई बात पे डिस्टर्ब होना चाहिए. Same path par, it's like failing every time with the same question in the exam. Kam se kam, see, that's what we have to learn, how to save my energy. How to save my energy throughout the day. Just check, close your eyes. Just check the people in your life and see which are the typical patterns of people in your life for which you get irritated typically almost every day or every time they behave that way. Typical patterns, which means what you know. This is how they do. This is how they behave. You know it. Nothing unpredictable. Very, very certain. सिर्फ कुछ चीज़ें उनमें से चूज कर लो अभी. Of the people you stay with and the immediate people you work with. Typical, एक दो चीज़ें सबकी सिलेक्ट कर दो. Which are typical behaviors, typical their ways of working. It is their sanskar, and I know their sanskar. And once I know their sanskar, I'm going to prepare how I'm going to be with that sanskar. कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? टिपिकल चीज़ें कुछ दिख रही हैं? किस किस को दिख रहा है? दिख रहा है. देख लो 2 मिनट और. And just put them on your list that this behavior, this pattern, I am a peaceful being. मतलब इस पे नहीं एनर्जी वेस्ट कर सकते. Simple like on the road. It is typical. It's going to happen almost every day. You're not going to find a single day where everyone on the road was driving your way. नहीं होने वाला है. So typical, predictable situations, you should always already prepare how I'm going to respond. Conserve your energy. हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं. हम अपनी शक्ति का ध्यान नहीं रख रहे. हम ऐसे 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 उसको स्कैटर करते रहते हैं सारा दिन. अच्छा, क्या दिखा वैसे टिपिकली? क्या दिखे? कौन से पैटर्न्स दिखे फॉर विच टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल जस्ट बी? हाँ जी, we are not saying whether they need to change or they don't need to change. We are saying I am not going to get disturbed with that sanskar. It doesn't mean we are saying you're right. For example, someone on the road is not driving right. They are wrong. They are not driving right. If I had the power to change them, I would change them. But if I don't have the power to change them, at least I have the power to conserve my energy, or am I going to waste my energy for strangers on the road? Is it possible that from today on the way back and from tomorrow onwards, we will drive without getting irritated on the road? ये कर सकते हैं? Can you accept? हाँ जी, कर सकते हैं? अगर कोई आपका कहना मान रहा है और आपको रोक के उसको बोलना भैया ऐसे नहीं चलाते गाड़ी, तो ठीक है. और जैसे कि वो हमारी बात मान लेगा, कहेगा अच्छा जी आप कौन? सो हम किस पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? जरा हम अपने आप से पूछें, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मुझे अपनी एनर्जी सारा दिन संभाल के शाम को अपने घर पर लेकर आनी है. माई फैमिली इज ऑलरेडी शॉर्ट ऑन एनर्जी.
If you had limited financial resources, how would you spend money throughout the day? ऐसे ही गंवा देंगे, लोगों को बांटते जाएंगे क्या सड़क के ऊपर? हम तो अपनी शक्तियां ऐसे बांट रहे हैं सारा दिन. And then we are reaching home like this. And then those children who are connected to our energy field, they are going like this. And then they are also becoming like us. कैसे चलेगा आगे ऐसा? कैसे? So now priority to conserve energy. Conserve energy. This glass is full. I have to do everything that I have to do, and I have to return with this glass full. That is life. I'm going to hold this in my hand and I'm going to do everything that I have to do, but I have to return home with this glass full because this is what I want to give my family. क्या देना है परिवार को? क्या देना चाहते हैं परिवार को? क्या देना है बताइए? Happiness. Please be very clear. खुशी देनी है, सामान नहीं. इक्वेशन गलत हो गई थी जब हमने सोचा कि हम सामान दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे. इतना सामान खरीदा है हमने, इतना सामान खरीदा है पिछले 25 सालों में कि जगह भी नहीं है अब उतना सामान रखने की. और डे बाय डे क्या हुआ? स्ट्रेस बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, डायबिटीज़ बढ़ा. Is that the result of all that we did and worked hard and bought for them? That is what was the result. Because हमने सारा कुछ करते हुए इसको खाली कर दिया. Priority of life was कि सब कुछ करते हुए, while working, while achieving, while doing, priority, this should be fine. Can I be on the road with my mind? Fine. Just taking care and navigating through all the people who are not driving right. कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं. और अगर खुद गाड़ी नहीं चलाते तो आंख बंद कर लीजिए. अच्छा सा कुछ सुनने के लिए लगाइए and use your time. Don't waste your time and your energy. The person who is driving for you is responsible for taking you right way. Conserve. Make this the priority of life. I need to conserve my energy. I need to conserve my energy. I cannot waste it. अब दिख गए वो typical patterns of people जहाँ energy waste होती है? दिख गए? Any other habit in at home? कोई भी habit जिस पर आप irritate होते हैं, जो आपको पता है उनकी habit है और फिर भी हम irritate होते हैं. हाँ जी. What is not clean? अच्छा, they will not greet you. अच्छा, every day? How sweet. कितना easy हो गया life. Life is simple. सिंपल है या नहीं सिंपल है? जब तक वो कभी ग्रीट करते थे कभी नहीं, तो रोज आप अपनी ईगो गेम खेलो, आज कौन पहले ग्रीट करेगा. जब पता ही नहीं है, पता है उन्होंने ग्रीट नहीं करनी, तो लाइफ बहुत सिंपल है. व्हाट शुड आई डू? अभी भी आप पूछ रहे हो 1.5 घंटे के बाद. आफ्टर 1.5 घंटा वी आर डिस्कसिंग व्हाट शुड वी डू इफ द अदर पर्सन डजंट ग्रीट अस. आप बताइए व्हाट शुड आई डू? इसमें तो कुछ झुकना भी नहीं है. ग्रीट करने के लिए झुकना नहीं पड़ता है. ग्रीट करना आपकी नेचर है. इज इट योर संस्कार? लिव योर संस्कार. लिव योर संस्कार. संस्कार मीन्स माई संस्कार, एंड माई संस्कार इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स संस्कार. इट इज माई संस्कार. इफ ग्रीट करना मेरा संस्कार है, विश करना मेरा संस्कार है, हेल्प करना मेरा संस्कार है, कोऑपरेट करना मेरा संस्कार है, सच बोलना मेरा संस्कार है, टाइम पर पहुंचना मेरा संस्कार है, तो वो मेरा संस्कार है. फुल स्टॉप. अगर पूरी दुनिया भी एक दिन उस साइड हो जाए ना, तो मेरा संस्कार अगर राइट है, आई नीड टू होल्ड ऑन टू माई राइट. दैट इज पावर. राइट? तो कल से आप क्या करेंगे? आई विल थिंक अबाउट इट. आई विल सी. अच्छा, आई विल ग्रीट. हाँ, सोचना नहीं ज़्यादा, प्यार से. जस्ट बी योर सेल्फ.
Sanskar means be yourself. We are not living in times where we can keep on changing according to other people's sanskar. नहीं तो कुछ दिनों में हम कुछ और ही बन जाएंगे. Right? One person doesn't greet you, so you're giving up the sanskar of greeting. Tomorrow somebody else is not helpful, we will give up our sanskar of helping them. Even if you give up your sanskar for one person, so I say there are 10 people in my life, 9 people I can greet, but one person doesn't greet me, so I don't want to greet her. But even for one person, if I give up my good sanskar, then I have started reducing my sanskar power. And that will affect even my other sanskars, because I'm affecting soul power. And if for one person, irrespective of how the person is behaving, if I hold on to my sanskar, I'm increasing my willpower. I will be able to strengthen my other sanskars. एक संस्कार से दूसरे संस्कार में शक्ति बढ़ती जाएगी. Anybody else? Any typical habit? हाँ जी. School timings. बच्चों ने स्कूल जाना है, रोज जाना है, सेम टाइम जाना है, बस ने भी सेम टाइम आना है, तो क्या चेंज करना है? स्कूल टाइमिंग चेंज कर दिया. वो यहाँ बैठे हैं. It doesn't matter what the time of the school is going to be, the sanskar will still be the same. It's this. हाँ जी. If a person is manipulative and he periodically or she periodically lies to you, that is their sanskar. That is their sanskar. है ना? That is their sanskar. They are emotionally strong or weak. They are emotionally strong or weak. People who are egoistic are strong or weak. People who are dominating are strong or weak. People who are manipulative are strong or weak. Weak. तो weak लोगों के साथ कैसे होना चाहिए? We are not endorsing their sanskar. We are only protecting ourselves from their sanskar. And if I don't protect myself from their sanskar, today they are emotionally weak, tomorrow I will become emotionally weak. I'm doing it only for myself, not for them. I'm not saying, you're right, you're very good. No. I'm just saying, I am not going to get disturbed every day for that same sanskar. That person has an infection, I have to protect. Why are you wearing a mask today? That's the reason why we are wearing a mask ना. अब हम बोले मैं क्यों मास्क पहनूं? ठीक है, मत पहनो. हम किसके लिए पहन रहे हैं मास्क? Because I know there's an infection around me. If I don't wear the mask, then the chances of catching the infection are extremely high. So I wear the mask. So creating your right acceptance level only means that I will not go why, how, ye, kaise, waise. Every day they're doing this. Every day I'm wasting my energy. I only have to be able to see the sanskar and then go. Just like how we drive on the road. Don't waste your energy. Save the energy to face the sanskar. Ji? Everything is? हाँ. What we are doing here is not becoming weak, we are becoming stronger. What we are doing is, when people's sanskars are not my way, the only thing we are working on is, I'm not going to get disturbed and agitated and waste my energy on a typical sanskar which I'm seeing every day. One of somebody's behavior and I get disturbed, okay, I'll get back to normal in some time. But a typical behavior, let's say somebody has the sanskar, suppose your senior has a sanskar of being critical.
So work however hard you want. Put in more than your best. And just with the pure intention of motivating you, they'll come and say, हाँ, but. अब हमने सोचा था इतनी मेहनत की थी तो थोड़ा तो. बट एक बार, दो बार, तीन बार जब हो जाता है, you understand it's not about your performance, it's about their sanskar. So we have to be able to see the difference. This is their sanskar, and that sanskar means emotional some vacuum in the other person. And if I start getting disturbed every time because of other people's emotional vacuum, one, I will go. Two, because my pain will reach them, their vacuum will go deeper. And three, things will only get more and more and more complicated. So it doesn't matter whether it's at home or it's at work, the pattern remains the same. You see the sanskar, you know the sanskar. What you have to do and behave, you have to see. But what you're creating here is the wastage of energy. So suppose I know that this person has a sanskar of criticism. I am not going to sit and wait, हाँ वो criticize करेंगे नहीं, but I know, तो every time I am not going to say, इस बार भी ऐसा किया, इतना करो तो भी ऐसा किया, चाहे कुछ भी कर लो तो. This wastage of energy is not needed. When you know the other person has that sanskar, then why are we expecting the opposite from them? Yes, we have the power to change them by blessing them with the opposite energy. Have you ever sent a vibration to the opposite person saying, I know you accept me and you love greeting me. आज से जरा भेजना शुरू करना. I want to see कितने दिन में रिजल्ट मिलता है आपको. हम opposite भेजते हैं. हम पता है क्या भेजते हैं? हम कहते हैं how egoistic. समझते क्या अपने आप को ये? विश भी नहीं कर सकते, हर बार मैं ही करूं. अब हम रोज भेजते ही वो हैं, तो संकल्प से सिद्धि वही होगी कि उन्होंने विश करना ही नहीं है. अब ऑपोजिट करेंगे. सेंड द संस्कार एज अ ब्लेसिंग व्हाट यू वांट देम टू बिकम, बिकॉज योर वाइब्रेशंस रीच देम एंड दे इम्पैक्ट देम. सो इंस्टेड ऑफ getting affected by their sanskar, then creating pain, then radiating pain. इतनी मेहनत करते हैं हम, इससे अच्छा just send them a blessing. खुद भी बच जाएंगे, वो भी change हो जाएंगे. Can we send blessings to people? We need to understand people. Spirituality is very important to understand people, because when we understand ourselves, we can understand people. And the fact is that people are not a spouse, a colleague, or a child. People are a soul on a journey. हम उनको एक रिश्ते की लेबल से देखते हैं, एक रोल पोजीशन के लेबल से देखते हैं. People are not roles, they are a soul playing the role. And how long has the journey of every soul been? How long has the journey of every soul been? And in every lifetime, हमें पता नहीं है क्या क्या हुआ है उनके साथ. We all know people who fear water. We know people who fear heights. We know people who fear being alone. ये तो हमें दिखाई देता है. There are people who fear trusting. There are people who fear losing people. And तो unnecessarily बहुत suffocating हो जाते हैं वो. और हमें लगता है कितना तंग कर रहे हैं ये हमें. वो हमें नहीं तंग कर रहे, वो खुद अपने आप से इतना तंग है अंदर. So we need to understand everyone is a soul on a journey. And a journey of many lifetimes means a journey of many experiences. आप किसी को जानते हैं जिनको हॉस्पिटल जाने से डर लगता है? किसी को जानते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी 4 बार टालते रहते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, देखेंगे, कल करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे. ये क्यों करते हैं? इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है हॉस्पिटल जाने से? बिकॉज दैट सोल हैज सीन ट्रॉमा विद हॉस्पिटल. हॉस्पिटल जाके देखो किसी दिन, पीपल आर इन डिफरेंट कंडीशंस. फिर वो ऐसे ही कंडीशन में व्हेन दे लीव द कॉस्ट्यूम and their last memory is very traumatic. Now the soul will change the costume. They would have forgotten what is going to happen, but hospital is equal to pain gets recorded over here. If someone leaves the costume in a flood, water is equal to pain.
thousands of people left their costume in earthquake. Thousands and thousands of people left their costume in the war. क्या लगता है वो क्या संस्कार लेकर गए हैं? What would be the impression recorded here? So much trauma. So much trauma. And now when that soul takes another costume, fear, insecurity. Fear, insecurity, predominant sanskar. But we don't know them as sanskar. We just say, my wife, my husband, my child, my colleague. We are looking at them as a label, as a relationship. They are not a label relationship. They are a soul on a long journey with many, many sanskars. Come into that relationship. So now, close your eyes and bring one soul there before you. Someone very close. जिसका कोई ना कोई ऐसा संस्कार है तो थोड़ा सा complicated है. And now don't see them as just a relationship, but just see them as a soul, a little star on a journey. Costume after costume after costume. Many experiences. And every experience created an impression on the soul. There is a wound, there is pain. That pain can be fear, that pain can be doubt, mistrust. That pain can be insecurity. Look at them. They are not causing us pain. They are screaming in pain. That behavior of theirs is a shout of pain. Now send them a message. I understand you. I accept you. Accept means I will now not create any negative energy about you. Why, how, kyun, kya, kaise, nahi. I understand you. I accept you. And now create the sanskar which they need to have. And send them a blessing. You are, fill in the blank, put that sanskar there. You are a powerful soul. You are a pure soul. You are a divine soul. You are a peaceful soul. Choose one word, and that word is the medicine for that wound, which means the counter sanskar of the sanskar they have right now. You are healing the wound. I understand you, I accept you, and you are fill in the blank soul. ओके जी, वापस आइए, वापस आइए. अब आप ये बताइए, इज दिस ईजी टू डू दिस? Is it easy to do this? We have two options. One option, understand, accept, bless. This is what we've done, 3 steps. Understand. Understand मतलब ये ऐसे क्यों है? ये इसलिए ऐसे हैं, soul on a journey. कभी कभी किसी लाइफ में किसी ने किसी को बहुत ट्रस्ट किया होता है, लेकिन उस ट्रस्ट के रिटर्न में उसको बहुत बड़ा धोखा मिला होता है, तो वहाँ पे ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन रिकॉर्ड हो जाता है. एंड देन यू मे बी द मोस्ट लॉयल स्पाउस, यू मे बी द परफेक्ट स्पाउस,
बट उनके पास ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन रिकॉर्डेड है। किसी के पास संस्कार होता है कि वो अपनी हर बात बताते हैं, बट उनको स्पाउस ऐसा मिलता है जो अपनी बातें नहीं बताते हैं। होता है ऐसा या नहीं होता है? हाँ, एंड देन वी से डोंट नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद मी, यू डोंट वांट टू शेयर विद मी। It is not you don't want to share with me, it is you right now don't have the sanskar to share. Because उस सोल ने कभी ना कभी अपनी सारी बातें किसी के साथ शेयर की थी और उसको धोखा मिला था, तो शेयरिंग इज इक्वल टू पेन। Now what happens is I keep getting hurt because they are not sharing. I keep getting hurt because they're not telling me everything. And the more I keep creating that pain, I create pain, but what happens to their sanskar? What happens to their sanskar? क्या होगा? क्या होगा? That sanskar will get. So instead of all that complicated thing, understand soul on a journey. And never say, they are doing this to me. It's not to me, it is their sanskar. Sanskar is a lens. The person sees that life through the lens. Instead of consuming pain, creating pain, complaining and criticizing, why not bless them to change the sanskar? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? So with everyone you see who has different sanskars, which is everyone around us, one line to remember is a mantra, soul on a journey. बोलिए। सारा दिन देखिए अपने आसपास दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। The souls leave the body and they come to us as family member. We have no idea उनके ऊपर क्या क्या recorded है। So every time remember, soul on a journey, which means I understand them. Second, I will not create criticism and judgmental. I accept them. And third, I will send them that energy which they need. I bless them. Easy, mushkil? Easy है या मुश्किल है? 3 words. What? I understand. Understand means soul on a journey. I accept means I don't create any negative thoughts. समझ आ गया तो अब क्यों negative thought create करेंगे? I accept. And third क्या करना है? I bless them. Bless them means specific thought of that sanskar and you say you are. जैसे हमने कहा ना, I am a peaceful soul. जैसे हमने कहा I am a peaceful soul, my vibration starts shifting. Now you say you are a peaceful soul. Suppose somebody doesn't share things with you, just send a sanskar. You are a powerful soul, you trust me and you share everything with me. भेजो मैसेज। इंस्टेड ऑफ रोज रोना, आप ट्रस्ट नहीं करते, आप ट्रस्ट नहीं करते, आप बताते नहीं, आप बताते नहीं, आपको शक करते, रोज रोना। और रोज या तो अंदर रोना या बाहर से रोना, वो संस्कार क्या होता जाएगा? सो एक्चुअली वो चोट लेकर आते हैं, लेकिन उस चोट को क्रॉनिक हम बनाते हैं। एंड हमारे पास पावर है, या तो दूसरों के वुंड्स को क्रॉनिक बना दें या दूसरों के वुंड्स को हील कर दें, और उनको हील करते करते हम भी बच जाते हैं। सो 3 वर्ड्स कौन से? 3 वर्ड्स कौन से? आई अंडरस्टैंड यू, सेकेंड I accept you, and third, we will create that thought and I bless you. Easy? Do it to everybody at work. Do it to everybody at work. Flood everybody with blessings. देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। हम इतना कुछ एक दूसरे को देते हैं, सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं देते हैं। और ये सब कुछ करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर हम इस सब को रोज़ याद करेंगे, राइट? इसीलिए वाई इज़ डेली मेडिटेशन इम्पोर्टेंट? डेली मेडिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट, डेली स्पिरिचुअल स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट, सो दैट माई राइट कोडिंग हैपन्स एवरी सिंगल डे। आपको लगता है आज हमने ये सब कुछ जो डिस्कस किया, ये कितनी देर याद रहेगा आपको? कितनी देर याद रहेगा? ये खत्म हो जाएगा कल परसों तक। So she is changing herself. She's changed. Acha, she changed and you also changed.
Acha? Every day. Anything done daily will always create results. Consistency is the key. सहन शक्ति मतलब power to tolerate. And power to tolerate ये नहीं मैंने सहन किया, not like that. Power to tolerate means what you are doing is not creating any disturbance here. हाँ जी? Way to tolerate? Any sanskar we tolerate, unethical behavior we don't. Right? क्योंकि संस्कार के साथ सहन करना बहुत ईजी है. अभी 5 मिनट बाद. Now, simple steps so that we strengthen ourselves to do this daily. If we feel one session can change my life, no, it cannot. But if I take something from there and I practice that every day, then it will. But to practice that daily, I have to revise it daily. The seed gets sown today, but then I have to water the seed daily. So what can we start doing first thing from today is, सबसे important चीज़ है, integrate a little time for yourself on a daily basis. जिस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे वो ठीक नहीं चल सकती है. हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं. It is lacking our attention. मेहनत नहीं कर रहे उस पे. So first and foremost is commit time to yourself on a daily basis. Are you ready to commit time? Are you ready to commit time? आज क्या डेट है? 16th April. आज की डेट लिख के रखते हैं डायरी में. 16th April 2023. Next year 2024 16th April. The world will be a little more complicated than what it is today. That is certain. देखते जाना सिर्फ चीज़ें कैसे होती हैं. And the reason is simple. The reason is because all of us all over the world are not strengthening our power. So automatically वो क्या हो रही है? वो deplete होती जा रही है. And that is what is creating all the chaos. Whether the chaos is of mental health, whether the chaos is of physical health, whether the chaos is of relationships, whether the chaos is in our profession. And the biggest chaos today is in environment. People all over the world, scientists all over the world are working so hard to protect the planet. लेकिन वो नहीं कर पाएंगे. वो नहीं कर पाएंगे. क्योंकि सृष्टि से संकल्प नहीं, संकल्प से सृष्टि बनती है. And so they are saying कि हमने जितना सोचा था, it's happening faster. Why is it happening faster? Because things here are happening faster. Do we want to save the planet? Do we want to save the planet? Yes. Do you know what all is happening with the planet? Now it's going to be in our lifetime. Do we want to save the planet? There's only one way. Start taking care of the self. आपको पता है, when we take care of the self, then we are happy, we are peaceful, we are contented, and when we are contented, we stop abusing the resources of the planet. जब हम हैप्पी नहीं होते, हम बस खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ दुनिया की हमें खुशी दे देगी. And because we are doing well and earning well, we thought we can buy everything that we want. And that is what has impacted the planet. The planet has enough resources for our needs, but it can never have enough resources for our desires. वो तो खत्म ही नहीं होती हैं. So one more sanskar to create. Let's start creating a beautiful relationship with nature. Abuse ना करें उसको. जो impact आएगा, it cannot be undone. So let's start buying what is needed. कर सकते हैं? Don't buy for happiness because उससे happiness मिलने नहीं वाली है, but I unnecessarily go and buy something. Every dress we buy also requires so much water to get created.
एंड हम थोड़ी बार पहनते और हम रख देते. नाउ आई एम बोर्ड ऑफ दिस. नाउ आई नीड टू बाय मोर. एंड सो एवरी टाइम आई एम बाइंग मोर, द एनवायरमेंट इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड. सो डोंट यू थिंक इट इज आवर कर्मा विच इज गेटिंग क्रिएटेड? बन रहा है कर्मा या नहीं बन रहा है? बन रहा है, बन रहा है. दो चीजें हैं. Create a life of simplicity, the mind will start settling down. Otherwise, start settling down the mind, simplicity in life will automatically happen. Buy what is needed. Don't buy because you're. कबर्ड में जगह नहीं है तो भी भरते जाते हैं. So let me go back and check my wardrobe. Let me go back and check my furniture. Am I just buying unnecessarily? क्या कर रहे हम? करें थोड़ा सा ध्यान. So आज की डेट फिक्स करो और नेक्स्ट ईयर देखना. The issues in the world would have gone to another level. It can't be better than what it is today. It will be more complicated than what it is today. So the only way to be able to sail through this is to start strengthening this power, which is the only thing in your control. The only thing in your control. So let's start prioritizing self-care. Let's start prioritizing soul strengthening. जब कुछ भी मेरे अनुसार नहीं होगा, सिर्फ एक चीज़ आई नीड टू बी माई वे इज़ माई माइंड. दैट माइंड विल टेक केयर ऑफ एवरीबडी. एवरी होम नीड्स वन पावरफुल सोल नाउ. लगता है आपको कि नहीं लगता? ताकि जब भी घर में कोई बात आए, एक जना होना चाहिए वो एक जना सबको संभाल लेगा. लेकिन अगर सारे ऐसे ऐसे हैं तो छोटी बातें भी बड़ी होने लगती हैं. जब हम बच्चे थे तो कहते थे हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए. अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए. पैसे तो आ गए अब हर घर में. पहले हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए था, अब हर घर में सारे ही कमाने वाले हैं. लेकिन सारे कमाते कमाते शक्ति गवाते जा रहे हैं. तो हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए. देयर इज वन पर्सन नीडेड इन एवरी हाउस हु इज स्ट्रेंथनिंग देमसेल्व्स एंड विद देयर वाइब्रेशन स्ट्रेंथनिंग एवरी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली. So that if anyone at home goes through any issue, any situation, for a child it could be just a situation at school. But हम इतने पैनिक हो जाते हैं. हम पैनिक हो जाएंगे तो उनकी शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? So every home needs one and we need to be that one. And to be that one, I will have to invest time on a daily basis. अपने आप नहीं हो सकता. So what do we do at the Brahma Kumaris? Every morning, we spend about 45 minutes to an hour for ourselves. Spiritual study, meditation, reflection, taking a pause after every hour for a minute to again practice the meditation and to remind ourselves and just very, very smoothly sail through the day. अब शुरू में that 1 hour is a very big investment. You really have to change things to create that 1 hour in your life. But it takes only about a month or two where investing that 1 hour starts saving a lot of time during the day. Because my ways of being is changing, my ways of doing things changes, my ways of working changes. So I save a lot of time during the day. And very soon I have extra time during the day. Because time जो waste हो रहा है ना, वो यहाँ हो रहा है. ज़्यादा सोचने से बहुत time waste होता है. और ज़्यादा सोचते हैं पर उसके बाद ज़्यादा बोलते भी हैं उसके बारे में. यू नो व्हाट हैपेंड, यू नो व्हाट शी डिड, यू नो व्हाट.
सो मच टाइम वी वेस्ट, कितना टाइम वेस्ट करते हैं और बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अपनी हर कॉन्वर्सेशन के बाद देखना कि कितनी काम की बात निकली थी इसके अंदर। अपनी हर कॉन्फ्रेंस, हर फोन कॉल के बाद भी देखना इसमें कितनी एनर्जाइजिंग वर्ड्स थे और कितने सारे डिप्लीशन थे। ऐसे ही बात करते रहते हैं, अच्छा फिर और, अच्छा फिर, अरे टाइम नहीं है, रखते। फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्या कहा, फिर आपने देखा न्यूज़ में ऐसे आया, फिर उसने, सेम थिंग्स वी आर टॉकिंग टू एवरीबडी, सेम सेम। इसका मतलब हम इतने बोर्ड हैं कि हम नेगेटिव बोल के भी हमें मज़ा आ रहा है, एंड हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ टाइम, वी जस्ट नॉट यूजिंग इट द राइट वे। तो व्हेन वी स्टार्ट दिस सेल्फ वर्क, एवरीथिंग ड्यूरिंग द डे विल स्टार्ट चेंजिंग। हम सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, और जब सही बोलेंगे अपने आप थोड़ा कम बोलेंगे, और जब कम बोलेंगे तो शब्दों की शक्ति बढ़ जाएगी, और जब शक्ति बढ़ जाएगी सामने वाले की शक्ति बढ़ जाएगी, एंड ऑल दैट स्टार्ट्स विद एन इन्वेस्टमेंट। जी भाई, इट्स रफली सम टाइम टू मेडिटेट, टू स्टडी, थोड़ा टाइम चाहिए ना। जैसे इफ आई से डू योगा तो आपको 20 मिनट्स तो निकालने पड़ेंगे, गो फॉर अ वॉक 30 मिनट्स तो निकालेंगे। सो इट्स नॉट फिक्स्ड फिगर, अप्रॉक्सीमेटली उतना टाइम फॉर योर सेल्फ। So at every center, we have a Raj Yoga meditation course, which we go and learn, and then we learn the meditation, and then we start doing it on a daily basis. But simple practices which we can start doing from today, simple practice which will allow your mind to start becoming peaceful. First practice, start disconnecting from work when you reach home. If you don't do this even now, it's going to get complicated by next year. Because most of the things that are happening because of tired minds. थके हुए मन है, बहुत थके हुए हम, क्योंकि हम सारा दिन काम कर रहे हैं। जब से ये खिलौने आ गए हम सारा दिन काम कर रहे हैं। So just कर सकते हैं। And if you're heading a team, then gift that to your team that we will not connect about work after 7 o'clock or after 8 o'clock. We will talk about it tomorrow morning. हमें लगता है ज़्यादा काम करने से ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। ज़्यादा काम करने से नहीं, एनर्जाइज्ड माइंड ज़्यादा अच्छा काम करके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाते हैं। थके हुए मन सुबह सुबह थके हुए ऑफिस आते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट घर पे लड़ कर आते हैं क्योंकि टाइम नहीं दे रहे थे ठीक से। हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाई किस टॉपिक पर होती है आजकल? इसी पर होती है, इसी पर होती है, बिकॉज वी आर एट वर्क एट होम। सो एक्सपेरिमेंट फॉर 1 month, disconnect by 8 o'clock from work communication. Give your mind the space to shut down the files, and last 15 minutes just before you sleep. Once you learn meditation, you will start meditating before you go to sleep. Until then, at least 10 minutes before going to sleep, consume pure healthy content. That is spiritual study, because content is our emotional diet. We take a lot of care of our physical diet. Now the time has come to start taking care of our emotional diet. And emotional diet is what we watch, read, listen. लिख लेना एक पोस्टर पे अपने घर पे, what I watch, read, listen is who I become. So content is equal to sanskar, is equal to destiny. And इसीलिए आप देखेंगे जैसे जैसे कंटेंट की एनर्जी चेंज हो रही है, दुनिया की एनर्जी चेंज हो रही है. So go back 25 years back, first TV, फर्स्ट सो सीरियल, सिंपल सिंपल, हफ्ते में 1 दिन आते थे, 2 2 2
to, and you will see the connection between content and the world. Because content is equal to sanskar, is equal to karma, is equal to destiny. So ध्यान से content consume करना है. It is somebody's business and we are getting addicted. We are allowing our minds to get manipulated. लोग हमें क्या manipulate करेंगे? हम खुद ही खुद के mind को रोज manipulate करते रहते हैं. किस किस को लगता है बार बार ध्यान जाता है फोन की तरफ ऐसा? तो मैनिपुलेशन ही तो है, एडिक्शन ही तो है, डिपेंडेंसी तो है. एंड एनी एडिक्शन इज अ डिप्लीटर. सो फर्स्ट स्टेप, रिस्ट्रिक्ट एंड चेक कंटेंट क्वालिटी. Entertainment should be energizing, not depleting. Then it's not entertainment, it's toxic. Lust, greed, ego, jealousy, comparison, competition, violence, crime, ये कोई entertainment होता है? This is entertainment. And उसमें भी बैठे बैठे सारे एपिसोड एक ही दिन में देखने. उसके टाइम सामने से कोई समोसा ला दे, no I don't eat fried. But I'll watch 10 episodes in one day. दोनों में से हार्ट पर ज़्यादा असर किसका होने वाला है? सो फिजिकल डाइट पे इतना ध्यान रख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट इट डजेंट मीन यहाँ पर जंक इतना सारा भर दिया, उसका भी असर यहाँ हो रहा है. बिकॉज इट्स मेकिंग माई पर्सनैलिटी दैट वे. डोंट लिसन टू द वर्ल्ड न्यूज़ बिफोर गोइंग टू स्लीप. उसके बाद सिर्फ शरीर सोएगा, मन सो नहीं सकता वो सारे विजुअल्स देखने के बाद. So 15 minutes before I sleep, just consume healthy, बैठे 2 minutes. 15 minutes before I go to sleep, consume healthy content. Choose so that your last layer of information is very pure. That is the content which will go into the subconscious mind during your 6-7 hours of sleep. कर सकते हैं? Easy? कर सकते हैं. Now, हाँ जी, 2 minutes. बाद में बात करेंगे, ख़त्म करना है, टाइम हो गया. ठीक है, 10-15 मिनट्स. रात को सोने से पहले मेडिटेशन, विच वी विल लर्न एट द सेंटर. मेडिटेशन क्या करेगा? इसको क्लेंस करेगा जो सारा दिन क्रिएट किया है यहाँ पे. मेडिटेशन क्या करेगा? सारा जो मैंने ट्रॉमा क्रिएट किया हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हो, उसको रिलीज़ करेगा. एंड मेडिटेशन मुझे एनर्जाइज करेगा. मेडिटेशन विल स्टार्ट टेकिंग मी टुवर्ड्स द डीप स्लीप स्टेज बिफोर आई एक्चुअली गो टू स्लीप. सो व्हेन आई लाई डाउन आई विल इमीडिएटली गो इनटू द डीप स्लीप स्टेज. तो एक्चुअली वो करने से आई नीड टू स्लीप lesser number of hours because I will immediately go into the deep sleep stage. Until we learn our meditation, at least we should be doing our affirmations before going to sleep. कौन कौन कर रहा है अपने affirmations सोने से पहले? अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं चलो फटाफट से लिख लो. फिर अभी क्या करना है सोने से पहले लिखो या अपने फ़ोन पे ऑडियो रिकॉर्ड कर दो. With this we have to. Just now we entered, we met a kid, she recited her affirmations like this, जैसे ABCDEF बोलते हैं. कहाँ गए वो बच्चा? Oh, she's gone home? No problem. I am a powerful soul. I am a powerful soul. I am always happy. I am calm and stable always. I am fearless. I am confident. I am a giver. My mind and body is perfect, healthy always. Any ailment, then specific affirmation for that. And the language of the affirmation is, my blood pressure is normal. सो संकल्प से सिद्धि मतलब जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा. इट विल मैनिफेस्ट. सो द वोकैबुलरी हैज़ टू बी व्हाट यू वांट शुड बी योर रियलिटी. क्रिएट अ थॉट, इट ऑलरेडी इज. एनी स्पेसिफिक संस्कार दैट यू वांट टू चेंज, यू राइट द काउंटर ऑफ दैट. आई एम. आई एक्सेप्ट पीपल. I accept people, people accept me.
All my relationships stand on respect and trust. My family is united. Then an affirmation, a sankalp for your work that you have to write. Whatever you want to achieve, whatever you want to become, short-term goal, long-term goal. You have to say, I have already achieved, fill in the blank. Instead of creating a thought, मेरी job को कुछ ना हो जाए, create a thought, my job is safe, secure, always. Success is certain for me. And last sankalp, God's power and blessings is a divine circle of protection around me. इसको visualize करें, एक white light divine circle of protection around yourself. This high vibration energy circle does not allow lower energy vibrations to enter into my aura. God's power and blessings is a divine circle of protection around me. बंद कर दीजिए, इतना ही करना है. 8 to 10 thoughts we have to write. The language क्या है? I am. आजकल हमारी language क्या है? I am stressed. I am busy. I am tired. I am this. No negative word with I am. It will manifest. क्योंकि संकल्प से सिद्धि is a law. It's a spiritual law. So to change any sanskar, just say, that's why we said, I am a peaceful being. Not I want peace, I should be peaceful. No, I am. So you can do this for yourself, you can do this for other people, you can do it for your children. They are focused, their concentration is highest, their performance is beyond their capacity, they have achieved fill in the blank marks. Give specific figure. जितना specific बनाएंगे उतना वो अच्छे से manifest होगा. Specific. So whatever you believe is the capacity of your child, add 5% more to that and put it in that sankalp. Because the sankalp is going to raise the capacity of the child. And most important, this stops all the other thoughts. पता नहीं क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, इस बार होगा कि नहीं होगा. It stops all that unnecessary inner conversation that goes on there. So just before going to sleep, I repeat my sankalp. And then when will I repeat my sankalp? First thing in the morning. Because these are the 2 times when the subconscious mind is active. So the seed has to be sown deep there. So last thoughts before going to sleep and first thoughts after my gratitude in the morning. And good would be if the last thoughts before we go to sleep are written. Diary रख लो, pillow के पास, रोज लिख दो. रोज लिख दो. Instead of saying, I have less time, I have less resources, say, I have more time than I need and I have abundance. कभी भी कमी का संकल्प नहीं करना. भरपूर, I have abundance. So a diary near your bed, write down your sankalp every night as your last thing before going to sleep. Date sankalp, date sankalp, date sankalp. It will take less than 1 minute. But it is a coding which is going to work for the next 6-7 hours, so that 1 minute is very important. और अगर हमने ये 1 minute नहीं किया, unaware we create some negative thoughts and go to sleep. इसने ऐसे कर दिया, जिसने ऐसे कर दिया, कल क्या होगा, पता नहीं मीटिंग में क्या होगा, कल मीटिंग है. Create an affirmation before going to sleep. Tomorrow's meeting is going to be a divine experience. I understand them, they understand me. It's going to be a perfect meeting. बोल के सोना है. जो हम सोचेंगे बोलेंगे वो हो जाएगा. So last thing before we go to sleep, first thing in the morning when we wake up, and before every meal and water. Because food and water has vibrations. Food and water absorbs our energy. Any of you have experimented the effect of your thoughts and words on plants? How many have seen effect of our thoughts and behavior on plants? दिखता है ना, तो वो ही है. So plants means sabji, plants means fruits, and plants means water. So जो highest impact है, it's actually on the water in every plant.
सो वाटर अब्जॉर्ब्स, इसीलिए बचपन से हर चीज़ पानी के साथ की जाती थी। प्रतिज्ञा करो पानी के साथ, मंत्र बोलो पानी के साथ, खाने पे क्या डालो पानी, एवरीथिंग वाज पानी, रिचुअल्स वर विद वाटर। व्हाई वाटर? बिकॉज वाटर अब्सॉर्ब्स द वर्ड्स। इसीलिए लोग कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो? हाँ, बिकॉज जिस शहर का पानी पियोगे वो संस्कार आने लग जाते हैं। सो इसीलिए द बेस्ट टाइम टू से आवर संकल्प्स 5 सेकेंड बिफोर वी हैव आवर मील, 5 सेकेंड बिफोर वी हैव। सो उसी बहाने 10-11 बार रिपीट हो जाते हैं दिन के अंदर। एंड एक्सपेरिमेंट विद अ वेजिटेरियन डाइट। करें आज से एक्सपेरिमेंट 2 महीने के लिए वेजिटेरियन डाइट। कौन रेडी है जो नहीं कर रहा अभी और रेडी है करने के लिए? वाई? जैसा अन्न वैसा मन होता है। I am what I eat is not my body is what I eat. I am what I eat. What would be the vibration of a slaughterhouse? क्या लगता है? क्या लगता है? What would be the vibration of a slaughterhouse? क्या हुआ? बता दो। What would be the vibration of a slaughterhouse? Pain or fear or negative क्या? Suffering, very good. Anger, hatred, sorrow, violence, death. Not of one animal, but every day, many animals, every day. And that is the energy that we are eating, and we are saying this is health. It's proteins, not health. It is proteins with an energy of pain, helplessness, fear, aggression, then violence, and then death. Not healthy for the mind and not even healthy for the gut. And the mind and the gut is connected. तो जस्ट 1 महीने के लिए करके देखो एंड यू गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग लाइटर। इसीलिए नवरात्रों में वेजिटेरियन खाना खाते हैं ना, लाइटर फील करते हैं कि नहीं? लाइटर फील करते थे। किस किस ने एक्सपीरियंस? वो 9 दिन लाइटर फील करते हैं। तो फिर 9 दिन क्यों लाइट फील करना, बाकी दिन हैवी? विच मीन्स व्हेन आई वांट टू इन्वोक डिविनिटी, व्हेन आई वांट टू इन्वोक पावर, शक्ति है ना, नवरात्रि क्या है? शक्ति का आह्वान हो रहा है। सो व्हेन आई वांट टू इन्वोक डिविनिटी एंड शक्ति, आई एम हैविंग अ प्लांट बेस्ड डाइट। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट एंड मेक इट अ रूल एट होम। नो टीवी, नो फोन while eating. Distracted eating, not good for the mind, not good for the brain, not good for the body. Mindful eating practice and make it a beautiful culture at home कि जब हम सब खाना खाने बैठेंगे पहले हम अपने संकल्प बोलेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। It's like a little personal prayer. छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। अभी वो चली गई घर, वो इतनी सी है। The one who had come on the stage in the beginning, that size. हाँ जी, Shivranjani. How old is she? 6. And she knew her affirmations like this, flawless. छोटे छोटे बच्चा कर सकता है। And when they start doing it at this age, they have learned to use the power of their mind to manifest whatever they want in their life. क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। कर सकते हैं? सिंपल सिंपल। तो कल मंडे कैसा रहेगा? बहुत अच्छा तो रोज़ ही होता है, कल डिफरेंट क्या रहेगा? पीसफुल, पीसफुल। हाँ जी, स्लो मोशन नहीं, नॉर्मल। स्लो नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ओके जी, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आप जहाँ जहाँ रहते हैं, within 3 kilometers of where you stay, there is a Raj Yoga meditation center. And at every center, the sisters are there to teach us meditation at whatever time, whichever day suits us. 5 days, 45 minutes to 1 hour daily, at whatever time and day suits us. हमें सिर्फ क्या करना है? 5 दिन के लिए जाना है, 1 घंटे के लिए। निकाल सकते हैं 1 घंटा 5 दिन के लिए? कौन कौन निकाल सकता है? यस, निकाल लेना, ताकि अपने घर का क्या बन जाए? पावर हाउस, शक्ति स्तंभ। And for those of you who are from the IT field, then September, the first weekend of September, I think it's 1st, 2nd, 3rd, there is a retreat in Mount Abu for all of you. So they will send you the link again on your WhatsApp. Register.
a nice, beautiful 3 days experience, which can be really life changing, to be in that energy, to be in that vibrations. And on the coming weekend, there is a Raj Yoga meditation course residential at the retreat center in Manesar. We are very fortunate that we have a retreat center within our vicinity in the NCR, which is about 30 kilometers down on this highway, where we can stay in that vibration and then learn the Raj Yoga meditation. So that's a Saturday, Sunday retreat. And the ones where you have registered, you can call or email and get all the details. So let's take a minute of silence, sit back and prepare once again. And then experiment today is we are going to go home in silence. At least next 15 minutes we will be in silence. This is a positive silence. A silence where I spend time with myself. That what is the shift that I'm ready to create today? In my thinking, my way of working, my lifestyle. Come again to the center of the forehead. Point of light. We are going to do this daily. It's a little exercise. Point of light. I am a powerful soul. I am the master of my life. I choose, I decide, I create. I prioritize myself. I prioritize emotional health of my family. I prioritize my inner power. While doing everything I do, I conserve my energy. The glass full. I am the creator, independent of the situation, independent of their behavior. I choose how to be. I understand them. I accept them. I bless them. I release anything that I have been holding on to. I leave the baggage behind. I release, I let go. I release, I let go. I forgive. Past is past, it's over. My priority is the glass full. Soul strengthened, battery charged. God's power and blessings is a divine circle of protection around me. Draw this circle of white light all around you. I am safe. I am secure. I am strengthened. Meditation is a part of my lifestyle now. Consistency. I am the powerhouse
of my family, the Shakti Stambh. Next 15 minutes, while we walk out, drive, it's going to be in silence. जैसा जैसा बताया जाएगा वैसे ही उठिएगा, बिल्कुल साइलेंस में. Angelic walk. The 5 rows at the back. 5 rows at the back will start moving out first. Five rows in the front. Another 5 rows at the back. Five rows in the front. सभी जो बैठे हैं वो उठ सकते हैं साइड पे भी. शुक्रिया.